ठीक है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। बुखार वही है, वही सुन लो। السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. نبدأ إن شاء الله. طيب. أوكي. السلام عليكم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. कोई आदमी ऐसा नहीं इसमें खैर और शर दोनों मौजूद न हो। ये इसलिए है ताकि हम अपनी तमीज़ की सिफत को काम में लाकर जो हक़ की रज़ा है इसको हासिल कर सकें। खैर और शर में तमीज़ करने के लिए पहले इस बुनियादी बात पर यकीन होना चाहिए और हमारा दिल और हमारी समझ इस बात से पूरी तरह रंगीन रहना चाहिए कि हम जो भी अमल कर रहे हैं वो अपने ही वास्ते कर रहे हैं, किसी दूसरे के वास्ते नहीं। यानी इसकी जज़ा और सज़ा हमको ही मिलने वाली है। The Sheikh is saying there is no human being in which there is no khair, in which he does not have both khair or shar. Every human being has khair and it also has shar. And we have to understand this fact that any amal which we are doing it for ourselves. It's not for somebody else. The effect of that will be on us, not on somebody else. Any amal which we do. Alhamdulillah. इसकी मिसाल यूँ समझेंगे, जब हम ख्वाब देखते हैं तो कभी इसमें दरख्त दिखाई दिया, कभी चीता, कभी आदमी, कभी दोस्त, कभी दुश्मन। फिर जब बेदार हुए तो पता चला हमारे पास कोई चीता आया, ना दोस्त दुश्मन, बल्कि वो ख्वाब का तमाशा आप ही आप में था। ख्वाब में हम परेशान हुए, कभी खुश हुए, कभी बीमार पड़े, कभी सेहतमंद, कभी लंबा चौड़ा सफ़र भी किया, कभी किसी बड़े हादसे से दो चार भी हुए। लेकिन जब बेदार हुए तो महसूस हुआ कि वो ख्वाब था, गोया कि हम खुद ही अपने सामने पेश थे। इस तरह हम जो कुछ अमल करते हैं किसी गैर के लिए नहीं करते, बल्कि अपने ही नफ़ा और नुकसान के लिए करते हैं। और नफ़ा और नुकसान में तमीज़ करके किसी एक का इंतखाब करने का भी हमें इख्तियार दिया गया है। खैर और शर दोनों भी कायनात में मौजूद हैं, लेकिन मुझे अगर अपनी फ़िक्र है तो मैं खैर को इख्तियार करूँगा और नुकसान की तरफ नहीं जाऊँगा। अगर फ़िक्र ही नहीं है तो मुझे सिवाय नुकसान और घाटे के कुछ हासिल न होगा। The Sheikh is giving an example. It is as if we see a dream. In the dream we see tree, we see cheetah, we see a human being, we see a friend, we see a enemy. Lekin when we get up from the sleep, so there's no cheetah, YouTube पे आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही है पूरी। So on the in the dream you don't, when you wake up from a dream you don't see no friend, no enemy, but it was just a scene of dream.
it was only yourself. In the dream, sometimes we are happy and sometimes we are depressed. In the dream, sometimes we are sick and sometimes we are depressed. In the dream, sometimes we are healthy. And in the dream, sometimes we go on a long journey and we go through a lot of tough situations, but this is all in the dream. So we have to realize all the amal which we are doing is we are doing it for ourselves. And we are doing for our own benefit and for our own nuqsan. A person, we have been given the option to choose between benefit and between failure, between the benefit and between the loss. We have been given the option. And both of them are available. So if we have concern and worry for ourselves, I'll pick up the thing which is khair, which is beneficial. And I will stay away from the loss. और अगर मुझे फिक्र ही नहीं तो मुझे सिवाय नुकसान और घाटे के कुछ हासिल नहीं होगा. And if I'm not worried about myself, so I will get only the loss. बीमारी की हालत में हमें इलाज की जरूरत पड़ती है ताकि हम सेहतमंद हो जाएं. इलाज के लिए किसी मुआलिज से रुजू होना पड़ता है, किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो दवाएं देता है और परहेज बतलाता है. कुछ चीज़ें करने की होती हैं और कुछ चीज़ें नहीं करने की होती हैं. और साथ ही ये इत्मीनान भी हमें दिलाता है कि मरज़ ठीक हो जाएगा, अगरचे दवाएं कड़वी भी हो सकती हैं. इसी तरीके से परहेज भी सख्त हो सकता है, लेकिन अगर सेहत प्यारी है तो कड़वी दवाएं और सख्त परहेज दोनों बर्दाश्त करने पड़ेंगे. और उमूमन ऐसा होता है कि हम अपनी सेहत के लिए कड़वी दवाएं, मुख्तलिफ इंजेक्शन, मुख्तलिफ किस्म के परहेज, यहाँ तक कि ऑपरेशन भी गवारा कर लेते हैं. इसलिए शेख कराते हैं. और ये सिर्फ इसलिए है कि हमें यकीन है कि अगर हम परहेज नहीं करेंगे, दवाएं नहीं खाएंगे, तो हो सकता है कि हमारी मौत वाक़ई हो जाए. जबकि इलाज करने से कुछ ही अरसे में फ़ायदा हो सकता है और फिर दवा और परहेज की पाबंदी हमेशा थोड़ी ही करनी पड़ेगी. इसी तरीके से नफ्स अम्मारा की खबासतें जिनका ताल्लुक शर से है, ये मेरे अंदर एक मरज़ है. हिदायत इसकी दवा है जो नफ्स को कड़वी मालूम होती है और नफ्स कड़वी चीज़ को पसंद नहीं करता. तो जिद्दी बच्चे की तरह नफ़ा और नुकसान की तमीज़ के बगैर जो जी में आए करना चाहता है. वतन साहब किबला ने ये गलत बीच में एक पेज मिसिंग है. हिकमत की बात है. हाँ 46 नहीं है.
48. India में 48, 49, 50, 51, 52, 48, 48, 49, 50, 51. Sorry, I'll do the English because the pages are missing from the book. इसी तरह नफ्स अम्मारा की खबासत है जिसका ताल्लुक शर से है, गोया ये मेरे अंदर एक मरज है और हिदायत की बात इसकी दवा है जो नफ्स को कड़वी मालूम होती है और नफ्स कड़वी चीज़ को पसंद नहीं करता। वो एक ज़िद्दी बच्चे की तरह नफ़ा और नुकसान की तमीज़ के बगैर जो जी में आए करता है। दो पेज में 48 है। So the pages missing. So the Sheikh is saying, so he was saying at the beginning that we have both the good and the bad. We have both the things. And if a person would focus on the good, he would get good out of it. And he focus on then he's giving the example, if a person is sick, so we need to cure ourselves so that we can be cured. And for the ilaj kya kahenge? For the treatment, person needs to go to the doctor who can give us the medication and tell us to stay away from certain things. And at the same time, he gives us the itminan and he gives us the consolation that this disease would eventually be cured, provided you take the medication. And the medication might be sour, and they might be difficult to swallow, and at the same time, the parhez, or the preventions might be tough. But if a person he likes the health, so he would not be worried if he has to take tough medication and tough prevention. He would endure it on himself. And because of this, because of our health, we use and we take very sour medications, or bitter, not the sour, bitter medications, different injections, different types of preventions, to the point where if any operation needs to be done, we are willing to go ahead with it, because we have this belief that if we do not prevent ourselves from taking from the things which the doctor has stopped us from doing it, and if we do not take the medication, so there's a big chance we might die. And also at the same time, we also understand that these medications and this prevention is not going to be forever.
This is only for the time when you are under the treatment. इलाज से कुछ ही अरसे में फ़ायदा हो सकता है, पर दवा और परहेज़ की पाबंदी हमेशा थोड़ी ही करनी पड़ेगी. He will not be using this medication for the rest of his life. This is for the temporary fixing. इसी तरह the same way नफ्स अम्मारा की खबासतें जिनका ताल्लुक शर से है, गोया वो मेरे अंदर एक मरज़ है. Similarly, nafs ammara, nafs ammara, because we have three types of nafs. Nafs ammara, nafs lawwama, nafs mutma'inna, mulhima, and nafs rahman. All of these different types of nafs which we have. So this nafs ammara and the khabasate means the evil habits which are embedded inside this nafs. They are like the disease. And the hidayat is like the medication which looks very bitter on the nafs. It looks very bitter on nafs. And because the nafs does not like bitter things. The example of the nafs is like a spoiled brat, spoiled toddler. Nafs, example of the nafs, नफ्स की मिसाल एक जिद्दी बच्चे की तरह है, जो नफा नुकसान की तमीज किए बगैर जो जी में आए वो उसने करना है. नफ्स ये, the nafs is like a spoiled toddler who, irrespective whether it's beneficial or harmful, it would just do what it feels like doing it. This is how the nafs run the show. इसी वास्ते अल्लाह ताला ने तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो निज़ाम है वो ऐसा ही है कि इंसान जब अपने आप को, ये जो सारा जो निज़ाम है ये पूरा अपने आप के बस इलाज है सारा. यूँ समझिए कि इतलो अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, नफ्स का तज़किया कि नफ्स के अंदर से वो बुरी आदतें निकल जाए और नफ्स मुहज़्ज़ब बन जाए. क्योंकि पट्टा तो उस कुत्ते पे डाला जाता है जो गैर तरबियत याफ्ता है, और जो आवारा कुत्ता होगा उससे सब लोग डरते हैं, इस वास्ते कि उसको नहीं पता ये किस वक्त हमला कर जाए, पता ही नहीं. वो तो जहाँ उसको हड्डी नजर आएगी वहाँ मुंह मारेगा, और जहाँ उसका दिल चाहेगा वो उसको काटेगा. ये हमारा कुत्ता है. लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा होता है और जो तरबियत के अंदर होता है, तो उससे ये चीज़ें बाइद, उससे ये चीज़ें नहीं होती कि वो जिस पर चाहे अटैक करे या जिस पे चाहे मुंह मारे, वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो मुहज़्ज़ब और तरबियत याफ्ता हो चुका है कुत्ता. क्योंकि नमाज पढ़नी है तो नमाज करना तो जी जी किसी और सिलसिले. तो इसी वजह से जब पट्टे डालकर उसकी तरबियत की जाती है तो फिर उस कुत्ते की कीमत, जो कि नजिस जानवर है,
उसकी कीमत लगनी लगती है, और जिसके सफाई के बड़े मसाइल हैं, और जिसके कि अगर शरीयत ने बहुत सख्त बातें कही हैं, जिसके हदीस में आता है कि अगर घर में कुत्ता होगा तो एक क़ीरात घरों में से अजर रोज़ाना कम होता है। पूछा या रसूलल्लाह क़ीरात कितना है, तो कहा कि एक उहद पहाड़ के बराबर अजर इसका रोज़ाना घटेगा, इल्ला ये कि कोई हिफाजत के लिए रखे घर से बाहर, तो उसकी इजाज़त है। ऐसे ही शिकार के लिए कुत्ते रखने की भी इजाज़त है, बशर्ते कि वो तरबियत याफ्ता हो, सुदायबा हो, तो उसको रखने की इजाज़त है। और अगर वो नहीं है, फिर उसकी पूरी तरतीब पूरे कुरान ने बताई है, फिर हदीसों में आया है, फ़ुक़हा ने इसकी तफ़सीलात लिखी हैं कि कुत्ते को क्या उसके अंदर सिफ़ात होनी चाहिए, तो फिर वो तरबियत याफ्ता कहलाया जाएगा। एक नजीर जानवर को जब उसके गले में पट्टा नहीं होता, तो बिल्कुल गैर तरबियत याफ्ता और आवारगी के साथ उसकी ज़िंदगी गुजरती है। इसी तरीके से जिसके अंदर पट्टा डाल दिया जाता, अगर पट्टा नहीं डाला तो जहाँ उसने खाना है, जहाँ उसको हड्डी नजर आएगी जाएगा, जिसको उसने जो चीज़ उसके मिजाज के खिलाफ होगी वो उसको हमला करेगा। तो ऐसे ही जब उसको पट्टा डाल के उसकी फिर तरबियत की जाती है, तो कुत्ता तो वही होता, लेकिन अब ये महज़ब हो गया, अब ये तरबियत याफ्ता हो गया, अब इसको जो कहा जाएगा वो सुनेगा। तो इसकी बहुत ज़्यादा इसकी कीमत लग जाती है, और इसकी कीमत बढ़ जाती है, और अशरफुल मखलूक़ात से ज़्यादा लोग इसकी कीमत निकालते हैं, या वो उसकी कीमत इंसान से बढ़ गई उस कुत्ते की। वजह उसकी ये है कि उसकी अब तरबियत हो चुकी है। ऐसे ही अगर अशरफुल मखलूक़ात है, और अगर उसने अपनी तरबियत नहीं की और अपने आप हवाले नहीं किया, और अपने आप को तरबियत अपने आप को नहीं डाला, और अपने आप को एक आवारा अपने आप को समझे कि मैं तरबियत याफ्ता हूँ, अपनी नज़र में वो तरबियत याफ्ता है, और वो यूँ समझे कि मैं तरबियत याफ्ता हूँ, तो अब उससे ये होगा, तो जो गैर तरबियत याफ्ता रहेगा तो उसकी वजह से सब उससे परेशान होंगे, उसकी बीवी उससे परेशान होगी, अगर बीवी गैर तरबियत याफ्ता है तो शौहर उसका उससे परेशान होगा, बच्चे उसका उससे परेशान होंगे। शौहर तरबियत याफ्ता नहीं तो उसके बच्चे और उसकी बीवी उससे परेशान, पूरा ख़ानदान उससे परेशान, पूरा कबीला, पूरे शहर के लोग, पूरे रिश्तेदार उससे परेशान। ऐसी अगर औरत तरबियत याफ्ता नहीं है तो पूरे ख़ानदान वाले, पूरे इलाके वाले उससे परेशान। इसलिए कि उसने तरबियत अपनी की नहीं, और जब तरबियत नहीं की तो इसकी वजह से सब उसकी उस आवारगी से और उसकी बदमिजाजी से सारे परेशान होते हैं। ऐसे ही उसकी जो मिसाल दी शेख साहब ने, जैसे एक बीमार है, लेकिन इंसान इस बीमारी के अंदर अपने आप को जो हवाले करता है वो इस वास्ते कि सेहत उसको प्यारी है, इसी वजह से वो इस पर भी तैयार हो जाके कड़वी दवाएं भी खाए, इस पर भी वक्त भी उसको मिल जाता है उसके अंदर। कोई डॉक्टर से ये नहीं कहता कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं कहता कि जी मैं बहुत मजबूर हूँ, कोई बात नहीं, तो टाइम भी निकल आता उसके पास, और उसके बाद उसके लिए वक्त भी निकल आता, सारी चीज़ें वक्त निकल आती हैं, और फिर वो अपने ऊपर सख्तियाँ करवाने के लिए राज़ी हो जाता है, कोई बात नहीं, मुझ पर सख्तियाँ करो, मुझे दवाएं दो, और मुझ पर परहेज़ की पाबंदी लगाओ, क्योंकि मुआलिज पर उसको भरोसा है, ये जो कह रहा है इससे मेरे अंदर का ये मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा, और ये दवाएं और ये परहेज़ कुछ अरसे के लिए मेरे ऊपर है, उसके बाद मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शेख ये फरमा रहे हैं बेआइन ही इसी तरीके से नफ्स अम्मारा है, उसके अंदर उसकी जो बुरी आदतें हैं वो, अब उसका इलाज ज़रूरी है, अगर उसका इलाज नहीं करेंगे तो ये नफ्स अम्मारा, एक दो दुश्मन है हमारे, एक नफ्स अम्मारा और शैतान, ये दोनों मिलकर इनका मकसद ये होता है कि पहले आपकी दुनिया को बर्बाद करें
और फिर उसके बाद आपकी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हैं, दोनों को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। और तुलाकर ये दुनिया के अंदर भी बर्बादी करेंगे, बर्बाद से मुराद इनकी ज़िंदगी को पूरा तहस नहस करेंगे, और फिर मरने के बाद जहन्नुम। ये गोल है किसका? शैतान का और नफ्स का। और नफ्स की मिसाल क्या दी? एक ज़िद्दी बच्चा जिसको तमीज़ नहीं है नफ़ा और नुकसान की, और बस उसको जो जी में आया वो करना है, बस मुझे वही करना है। So the Sheikh was saying that this is how the system works. That if a person, if he does not, if he has a disease, he goes to a doctor to get his treatment so that he can be cured from this disease. Similarly, if a person has a nafs mara, he has evil habits, and then he has evil habits, and these evil habits, or a person when he has evil habits, and so the example is, the Sheikh is saying, is like nafs ammara. Nafs ammara has evil habits, and the dawa and the cure is the hidayat which he has to take. If he thinks that Jahannam is real, and if he thinks that the failure of this life and also of the hereafter will happen, then what he will do? He will take out time to fix his diseases of nafs ammara. Because we have two enemies, one is nafs ammara and the second is shaitan. And the example of the nafs ammara which we just now read is like the example, how does the nafs ammara act? Like a spoiled toddler who is going to be very stubborn, and he, irrespective whether it's beneficial or not, it wants to get that thing done. This is how the toddler is, spoiled brat, ziddi bacha, irrespective. He doesn't care what's beneficial, what's not. He wants to get it done. This is what he is focused upon, to get what he wants to get done. So then what happens? If this continues of what this nafs ammara does, and if the person continues on that nafs, continues doing what he does, so then what happens? This, uh, where this will lead? This will lead to the destruction of his this life also and also of the hereafter. जहन्नुम, आखिरत जहन्नुम, और दुनिया के अंदर भी क्या कहते हैं बर्बादी होगी उसकी. He will be a failure in this life also, and in the akhirat also he is going to be a failure. Because that's the reason what they say is that the small child, when he's spoiled, they say you need to take out his that he's being a brat. You need to remove those qualities from him. Otherwise, if he continues doing all that, so when he grow up, he is going to become like that. You have to use wisdom to remove those evil qualities from the child. This is what the Sheikh is saying. That's the reason a person has to be in an environment. That's why we say that a person should come, start with 1 day, 2 day, 3 day, do the i'tikaf, and then put himself in this, subject himself in this thing. Because first of all, then there is zikr has to be prescribed. Minimum zikr in a state of khalwa is 24,000. This is minimum zikr when he's in this state. Because first of all, what the zikr does is first it will पहले ये जिक्र आपके ज़बान को तहजीब देगा. First of all, the zikr is going to what do you call क्या कहते हैं उसको तहजीब देना है, it's going to fix the tongue. First, what the zikr will do, it is going to islah करेगा, it's going to
हाँ नहीं what the zikr नहीं वो मैंने नहीं the zikr what it will do is this it is going to fix is a very crude word fix his tongue which means the zikr will rectify his tongue first his tongue is going to become जो जबान वो जो है वो पटरी पे आएगी क्या नहीं उसको हाँ जबान मीठी हो जाएगी ठीक है that the tongue is going to come on the track first thing the tongue will come on the track the tongue will speak what is necessary it will not speak what is unnecessary or irrelevant sometimes a person for example people so first it will rectify his tongue the zikr will rectify his tongue first the tongue will become on the right track पहले उसकी ज़बान जिक्र पहले इसकी ज़बान को इस्लाह कर कर फिर उसके नफ्स का इस्लाह करता है जिक्र First of all, the zikr is going to clean his tongue and rectify his tongue. Then after that, the zikr will rectify his nafs. This is the name of Allah subhanahu wa ta'ala. It's going to clean his, first of all, to fix the tongue. That's why from the zikr lisan it turns into zikr qalbi, zikr ruhi. Then it goes inside the nafs. And then it fixes the nafs. There's no other way to fix the nafs. So that needs, so this distillation needs to take place. Distillation, filtration of ourselves. So that we can become pure. Otherwise, usually we don't have control on ourselves. हमें अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता और उसकी टेस्टिंग जगह मस्जिद नहीं है उसकी टेस्टिंग की जगह लड़ाई के वक्त है वहाँ पर मस्जिद में तो डाकू भी शरीफ बन के बैठता है The testing place is not, I mean, to test the nerves is not the masjid. Yes, inside the house with the wife and बीवी के साथ आखिरी जब उस पे हो जैसे ही in the business where the both are full anger is there. This is where the testing is taking place. This is where we can see, each one of us can see where we stand. हमेशा अंदाजा होगा हम कितने तरबियत याफ्ता है each one of us I don't need to know each one of us can see can know for himself that in that situation how is my reaction so when a person is in this situation then a person can realize where he stands what is my level no not in the itikaf in the fight in the house how much my nafs controls me this we will find out when we are in a state of fight with the wife or with somebody this will tell us where we are how much control of nafs we have on ourselves Yeah, I used to get angry. Yes, at the time of that, then then a person realize if he wants to know where he is, he will find out at the time of anger when he's in a full-fledged fight. How much his nafs has control, how much he has control of the nafs. Is the nafs controlling him or he is controlling the nafs? वो टेस्टिंग है आप अपनी खुद टेस्टिंग कर सकते हैं You can do your own testing
I have my own testing, his own testing, own testing, own testing. Everybody his own testing. Nobody needs to know. Each person needs to know about his own testing. I don't need to know your testing, you don't need to know mine. But you need to know your own testing. I need to know my own. How much I have. So this controller, so this shows where I stand. So Zikr first, what it does is first fix the tongue. The tongue which starts like this, like a snake. Tongue is like a snake, we have no control. जबान की मिसाल जो सांप की तरह है, जबान सांपी की तरह होती है. The tongue is like a snake. If you see the snake and if you see the tongue, ऐसी move, जबान के अंदर भी सांप की तरह move होती है. In the mouth also, the tongue is moving around like a snake. If you open the mouth, see in the mirror. अक्सर इसका जहर सांप से भी ज्यादा खतरनाक है. जुबान का इसका जहर भी सांप से ज्यादा खतरनाक. Everybody asks where are you? I think I disappeared. So what happens if you see the snake? This is how it does also. If you see the movement of the snake, आप सांप की चाल देखें और आप आईने में अपनी ज़बान को देखें. They look very similar. You know how they move around. You like this. This is how the snake is, and this is how the tongue is. First of all, the zikr will control that in this movement. It will stop it. Put it on the right track. किस वक्त क्या बात करनी है? What we need to speak at what time? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was so careful. I mean, of course, Allah has made him so much full of noor. When the food used to be present in front of him, you would not praise the food. खाने की, क्योंकि खाने की तारीफ करना हिर्स की अलामत है. तो सुन्नत के खिलाफ है. हिर्सी आदमी लगता है ना, क्या खाना जनाब, और मजा आ गया. हिर्सी आदमी है ना ये. आप तो आखिरी नबी हैं. खाने कैसे, क्या खाना यार, मजा आ गया. The food, he would not praise the food. The food. आयत सभा में हदीस लिखी हुई है. वो शब्द लिखा उसको. तशरीह भी मौलाना सब लिखी. And then if the food is not good, he would not eat it. खाना अच्छा नहीं पका भाई, नमक डाल दिया बहुत ज्यादा, या फीका है, या कुछ भी है, बहुत मिर्चें हैं, ये खाते नहीं थे. आप जैसे तो गोश्त के बगैर भी खाते थे. ये दाल, ये सब्जी है, गोश्त नहीं आए. So the zikr will control the tongue, मजे भी और बोल भी, दोनों. The zikr, it will control the tongue also in speaking, and also the food also. The food? Yes, zikr. What you eat? It will control the tongue on both the aspects. दोनों का इस्तेमाल ज़बान से होता है ना. Because both use the tongue, speaking and eating. They both, the tongue is used in both the process. So both the process will get aligned by the zikr. तो खाने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बहुत तारीफ नहीं फरमाते. अच्छा खाना है. If the food is not good, he would not see what kind of food is this. You wouldn't say that. He would not eat. That's it. पसंद नहीं है, छोड़, खाते नहीं यार. That's it. For example, if it's something which is, it is not, you're a human being. Sometimes it's not according to your liking, things like that. He would not eat.
That's all. That's the only thing he would do. There's no fight, there's no war, there's no screaming and shouting and yelling. Nothing on the food. And if the food is tasty and everything, you would not keep on praising it. You just eat. ये फरमाया तारीफ करना है ना हिर्स की अलामत है खाने में वो हिर्सी है so I mean so we have been too much deviated from the actual path of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam हमारी मुआशरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब से हट चुका है काफी our culture, our way of life has deviated a lot from the way of Rasulullah. So it's very important. We need to bring the ways of Rasulullah into our lives. May Allah make it easy for all of us. So we can do some zikr. So the tongue won't speak unnecessary stuff. Let's say, oh, it's not good. You know? It looks like Sigur cold, isn't it? Oh, you know this? Do you have to do zikr? Read 10 times قل هو الله أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هو الله أحد الله الصمد. يا الله اسك الصواب حضور صلى الله عليه وسلم سيدنا سليمان عليه السلام سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سيدنا فاطمة رضي الله تعالى عنها سيدنا حسن رضي الله تعالى عنه سيدنا حسين رضي الله عنه هذا عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه معين الدين الچشتي رحمة الله عليه ووالدي الصابر يوسف رحمة الله عليه وهو شيخ خصوصا رحمة الله شيخ واجد لي شخصا وعطى رسول الله صلى الله عليه يا الله يا الله إن شاء الله أشكر السماوات وأشهد أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب موصوم مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصم والجبريل قادم والبراق مركب والمعراج سفر وسرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
لا إله إلا الله 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 الله
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وآله وسلم 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم اجزي عنا وعن والدينا ظلما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة هنية لا نظمأ بعدها أبدا واجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره
ولا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخلا. اللهم يا شافي الأمراض اشفنا واشف آباءنا وأمهاتنا. اللهم ارزقهم شفاء كاملا عاجلا يا رب العالمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي عظمي نورا وفي بشري نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن أمامي نورا ومن تحتي نورا ومن خلفي نورا. اللهم اجعل لي نورا واعطني نورا وعظم لي نورا واجعل في نفسي نورا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله.